Good morning, students. Which is slide visible? हाँ जी मैम, visible. Okay, thank you. Good morning, students. Good morning. Okay, we're going to start with a very interesting topic. Now, some of you to this profession, you've already taken your course. Some of you will be entering into this profession. And the topic that I'm going to take up is basically one topic which is not just required in your profession itself. Since we'll be all entering into the world of work, we'll be entering into the social world where we will know more called as kids. And basically, we've transformed into adults now. So taking these points in mind, क्योंकि देखो जब तुसी जॉब वास्ते जा रहे हो या तुसी अपने सोशल वर्ल्ड विच जा रहे हो ते you will be facing a number of situations. So just taking those into the consideration, I have just taken up this topic. My topic for today is coping. How are you going to cope up with the various situations? And what are the best ways of coping these kinds of situations? So what basically do we mean by now? Where see, you'll be coming across a number of situations. जिथे थानू किसी तरह दा कोई stress होएगा, कोई किसी तरह दा कुछ ऐसी situations होंगिया. We can say that some difficult situations. Emotionally difficult. कई बार इस हद मतलब ऐसी ये कहने हैं कि पंजाबी सिंपल भाषा की ऐसी बहुत पीड़ित फील कर दे हैं because come across such phase, we have such a phase of stress and trauma. So to manage these difficult situations, to manage these difficult emotions, we need to be strong. And to be strong, now strong here doesn't mean that you need to have a strong body, but you have to be strong emotionally. You have to be a fighter. And so to be a fighter means to manage these situations that are creating problems. We go through a number of mechanisms and we call these mechanisms as coping mechanisms. Now, you will see that तुसी सारे ने B.Ed M.Ed ना term एक पढ़ी सी defense mechanisms. But you know what is basically the difference between defense mechanisms and the coping mechanisms? जो defense mechanisms से जड़े होंगे, वो defense mechanisms like for example, I'll give you one example. We've all heard of a dancer. What is her name? Jibi Clegg nahi hai? Sudha Chandran, yeah. Sudha Chandran. Now, Sudha Chandran was physically handicapped. She was basically polio-ridden. And so people, her parents used to think that what is she going to do with life? She will not be mobile, inna zyada movement nahi possible, inu kis tarah da. Unhe apna jeda bhi udi kami si, unu defend karan aste. She started working over her handicap only, and जो उदी leg के handicap सी वो उसी ते work करे उन्हें. और ये चीज जेडी है ये basically साडे mind दे unconscious level तो इस तरह दे mechanism नु कहते हैं over compensation कि उन्हें अपनी handicap नु compensate नहीं but over compensate कीता. तो ये देखो उदी एक leg नहीं है. She has an artificial leg. Besides that, irrespective of that, she's one of the best dancers. Now, this is a defense mechanism which comes at the unconscious level. However, when you are going to face situations in your job, in your workplace, or probably maybe at home, उत्थे जेडी तुसी जिवें cope up करना है,
वो ਜਿਹੜੀ coping up है, that is to quite an extent you are conscious about it. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ एक external situation है जो कि परेशान कर रही है. ਹੁਣ ਉਸ external situation ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ react ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ fight ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ coping. So defense mechanism can be at the unconscious level. You are generally not aware of it. But coping mechanism, we are aware of it. We are very conscious about it. We know that this is the external situation which is creating a problem, and we try to manage that external situation by being more conscious, by being more purposeful. So my topic today will be coping, because see, defense, yes, but defense mechanisms, if they are positive defense mechanisms, they are very good, but we generally avoid the defense mechanisms which affect our psychology. But yes, coping is important. How can you cope with the stressful situations? Anji, now I want you all to answer. बच्चे अपने mics on कर लो. And ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਬਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿੱਤੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਕੋਪ ਅਪ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫਾਈਟ ਦੋਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ? ਯੈਸ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼. Beta, I'm not here to give a lecture because this is theoretically you all know everything. Hanji, tusi jad thonu koi stressful situation aandi hai, tusi kis tarah nal cope up kardeo? Hardeep Singh. ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ। Okay, ਤੁਸੀਂ solution find out ਕਰਕੇ, ਬੱਚੇ solution find out ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ elaborate ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, solution find out ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. Next, Hardeep, you start thinking about it. Next will be your turn. ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਕਦੀ? ਹੈਵ ਯੂ ਫੇਸਡ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੰਘੇਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਮ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਮੈਮ, 6th ਕਲਾਸ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵੱਧ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵੱਧ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ +2 ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਟਾਸ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। Very good. Yes, very good. Yes, that's perfect. Okay, perfect. Hanji, right. Anybody else wants to comment on this? Anybody else who wants to tell some other way? Okay. Now, beta, we cope up with various stressful situations like जो रमन ने किया, meditation. Yes. सवेरे उठ के सैर करना. Then she said कि वो जेडी भी problem मैंने परेशान करी है, I want to get out of it and I try to get out of it.
that is, yes, you relax. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. It is always advised whenever you are in a stressful situation, deep breathing करो. मैं अपने मेंटर वालिਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ स्टेज पे जा रहा है, मैं उन्हें हमेशा कहती थी कुछ नहीं करना, स्टेज पे जाके डायस को पकड़ करना 2-3 लंबे लंबे सांस ले लो, you will feel very easy. Now then, as Hardeep said, talk to your friends. Yes, that's called as unplugging. Talk to your friends. अपनी problem nu release karo by talking to others. It may give you some way out. Yes, keep calm. शांत होने की कोशिश करो. If you shout back, if you retaliate, yes, there are some people who really get out of this situation by shouting. So in that case, best is go in a closed room, वहां जाकर चीखो, किसी के ऊपर मत चिल्लाओ, because when you shout at somebody else, that might create again another stressful situation. So close a room and shout over there. That may give you some kind of, that may de-stress you. बाहर निकल जाओ, go and enjoy, go and play, go and, if there's nobody, go outside, see if there is nobody. छोटे बच्चे भी गलीच खेल रहे ना, उन्हां दे नाल छोटा जा बैट पकड़ के ही खेलना शुरू कर दो. Have fun. That is the, I mean, you have to be, basically you need to be very optimistic and take things easy. Then that is going to be better, rather than taking that stress as a heavy heart. So as two students have already quoted also, so the commonly used coping mechanisms that we often use are, just as Hardeep said, talk to your friend. That's called as support. To see apni gal da catharsis kar rahe ho, unplug kar rahe ho with the support of others. Raman said meditation karo, muscle relaxation karo, yoga wale pranayam karwande. Okay? So that is basically relaxation, where you are relaxing your muscles, you are using various calming techniques. If nothing, please go out and sit, go and sit out. Go and sit out, sit on the grass. So, soft jam music, us time pe fast, hard music nahi sunna, बहुत soft ची कोई tune सुन लो, जो भी थोनो relax कर रही है. Then I think Raman only, she said problem solve, जो भी problem होता उन्हें solve करना है. Yes, उन्हें बहुत अच्छी तरह देख के, उदा सारा नजरिया अच्छी तरह देख के find a solution to that problem. To come out of this coping, this stressful situation, your humor plays a very good role. To see humorous, so well and good. Otherwise, go and sit with somebody who's very humorous. जो थोनो हंसाएगा, जे तुसी फिर किसी रोंदू को जाके बैठ गए तो तुसी पहले ही रो रहे हो, तो वो थोनो होर रोवांगे. So go and enjoy. If there's nobody with you where you are not humorous, there's nobody, put on the TV, take your mobile and उधर ते कोई comedy show देखना शुरू कर दो. कोई ह्यूमरस जोक्स पढ़ने शुरू कर दो. आजकल ते वैसे ही सारे से बहुत सौखा कीता है, इन्नी रील्स आंदियां, रील्स देख के कहने का मतलब ये है कि वो जो सिचुएशन थोड़ा स्ट्रेस दे रही है उदे जो आप बाहर आना है, अगर उसी बारे सोचते रहेंगे, it will aggravate and then it'll accumulate and then that situation becomes unbearable. Then yes, physical activity is very important. निकल जाओ बाहर, जाके running करो. If there's a swimming pool around you, swim. That's very good. Dancing is a very good coping mechanism. Put on loud music and dancing. नहीं भी आता तभी dance करो. जब तुसी dance कर रहे हो, थोड़ी movement जब हो रही है, bodily movement is going to make your brain also move and it will let you de-stress. So go into some kinds of sports. Avoid. Now, what are the coping mechanisms that you need to avoid? We take these coping mechanisms, but we need to avoid escape. उस चीज तो बचना जड़ा है वो आप currently वो करना है, लेकिन ये नहीं कि कई situations ये नहीं कि जी like just हरदीप वाला example है, ये नहीं कि हुन हरदीप ये बच्चे नु कहता कि तू स्कूल छाड़ के चले जा, तू दूसरे स्कूल में एडमिशन ले ले, तू तो इंटेलिजेंट है. नो,
That is not demanded. So escaping is not a good coping mechanism. Don't escape from the situation. Fight. Be a fighter. Don't take to such situations. We generally see some people who are stressed. Plenty of you must be of those kinds. कि exam days it stress होता सी या किसी तरह दी कोई stressful situation है या तो बिल्कुल ही रोटी पानी छाट दें या खाई जान overeating नहीं कर. Some adults, they take to binge drinking. No, avoid that. Avoid excessive use of internet at that time. Some students, they are stressed because they are not able to cope up with their studies. वो छोड़ के they start taking to internet, they start taking to video games. Avoid that. Avoid being, avoid those kinds of activities where there is some kind of risk taking. अपने आप को harm करना, अपने nail bite करना, अपने आप को hurt करना. This needs to be avoided. These kinds of coping mechanisms are very, they're very common. They are prevalent. Students take to these kinds of coping mechanisms. Adults take to these kinds of coping mechanisms. I know plenty of adults who are into difficult situations and then they start hitting themselves. वो कहते हैं हम अपना सिर जाके दीवार से मारते हैं या हम किसी तरह. No, don't take such kinds of compulsive activities. Don't take such kind of risk-taking activities. Don't harm yourself. Always choose better coping skills. Choose those coping skills where थोड़ी चीज you need to be wise in choosing them. So yes, there are a number of, you will be facing a number of stressful situations, negative experiences. They are all a part of your life. We cannot, you cannot get out of it. तो सी एक हो कि जी मैम क्यों आए? नहीं, ये आएंगी जब आप इधर-उधर, जब आप वर्ल्ड ऑफ वर्क में जाओगे, जब आप social life, when you are into some kind of social life, you will, yes, you will get married, you have so many problems. You will have problems with the people in the society, but how to handle these hardships, that is important. So always take those experiences which allow you to, मतलब थोड़ी जितने negative experiences है, उन्हां करने, उन्हां एक negative नु positive बनाने help करन. और उद्देश्य की है, stop misinterpreting. Don't just start having bad intentions about people. ना कि no, क्या कहते, ये world ही ऐसा नहीं, आपके साथ problem है, the whole world. ज़्यादातर NGO है ना, सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली दिखती है. You see the world as you are. ना, so it's not. Yes, if you're positive, see the world as positive. But when you are in a negative, stressful situation, do not see the world in a negative situation. Stop feeling bad कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? Why am I like that? Some people start thinking, मैं ही ऐसी हूँ, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है? No, it is with everybody, but people know how to fight. Everybody goes through difficult phases in their life. So fight that anxiety that is there. क्योंकि जे तुसी इस एंजाइटी नु आज नहीं फाइट करोगे, मैं अगेन एक गल कह रही हूं कि it will keep accumulating and it will become more stressful for you, leading you to various unwanted situations like depression or like, you're going to adopt some maladaptive, you're going to be maladaptive. So coping skills ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ अच्छी skills ਨੂੰ learn ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और ਜਿਹੜੀ कोई bad है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ unlearn ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ replace ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. जो अच्छी coping skills है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ learn ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So you just only thing is that is required is that you need to be confident, you need to have internal peace. That is more important. So now just an basically I'm not taking up this activity here, but just I hope you all have your paper pens. If you have it, सिर्फ इतना note करो बेटा कि आप जब कोई difficult situation आती है
तो आप कौन सी स्किल्स यूज करते हो और उनमें से कौन सी स्किल्स आप इंजॉय करते हो. मेक अ लिस्ट ऑफ द स्किल्स दैट यू एंजॉय. There is an activity that can cause stress to one individual, but it might help another person to cope up. ठीक है. So इस करके थोड़ी सबकी अपनी अपनी होगी. ये नहीं है कि जो रमन दी है वो हरदीप दी है, वही पुनीता दी है, वही गगन दी है, सबकी सेम नहीं है. You 17 of you will have different skill, different. You'll have a different list because there, as activity may cause stress to one individual, but may help another to cope up with that individual. So here the important thing is कि we need to find the effective coping methods जो कि सानू fighter बनाएंगे, जो कि सानू resilient बनाएंगे. Resilient का मतलब होता है बेटा bounce back होना. मतलब जब थानू कोई भी situation है, वो थानू trouble कर रही है, उस situation से निकलना. That is called as resilience. So how do you bounce back? How do you thrive for that situation? So just make a list. I hope you've all noted. You're going to make a list of all the skills that you enjoy, and then you will see that this is going to work for you the next time. So like, for example, some people, when they are stressed, they like writing. जिन्हें भी poets हैं, ਤੁਸੀਂ देखो जिन्हें poets authors हैं ना, basically अगर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ introverts ਹੁੰਦੇ और वो अपने लोगों नाल ज़्यादा ना ज़्यादा हिलदे मतलब मिलते जुलते नहीं हैं. So उन्होंने जब अपनी कोई भी situation है, they write, they artists, they draw, paint, photography, ठीक है, they're playing some instrument, singing, dancing. कुछ नहीं, रात को 11-12 बजे कुछ नहीं कर सकते, उठो जाके नहालो, नहाओगे सिर पे पानी पाओ. It's going to give you some kind of relaxation. Go to and just take a round in your lawn. Take a walk. If you are in a quite a comfortable situation and you feel that it is not affecting you mentally, go for a drive. But yes, if you're mentally so much affected, then please don't go for a drive. It might turn into an act. Watch TV, watch movie. But when we are watching TV या movie, कोई light चीज देखना, बहुत heavy movie ना देखना बाचा. कोई अच्छी videos देख लो YouTube पे, कोई game खेल लो. Best for girls is go out for shopping. That's a very good catharsis. So just कुछ नहीं, अपनी अलमीरा साफ करने लग जाओ. Take a break, take a vacation. Go out. These are some of the good coping mechanisms. Hardeep said, talk to someone you trust. Yes, I really believe into this. Yes, when you talk to someone you trust, तुसी अपनी गल ना जब आउटलेट देता बेटा कैथारसिस हो गया, नहीं तो वही अंदर ही अंदर दिमाग विच उदी इतनी खिचड़ी पकदी है कि सानू बहुत औखी करती है. And set your boundaries in your mind only. Yes, I'm not. Your brain will say, this is really bad. Let me do this. Let me, I mean, kisi tarah da self-harm. But no. Say no. Write something to somebody who's special for you. Basically, beta, mere कहने का मतलब है, be very positive. Be assertive. पहले भी ये गल कही, humorous हो. थोड़े को अगर कोई pet है, उधर ना तो कई लोग कोप कर दे, कोपिंग डिफेंस के दौरान उन्होंने कुट्टन लग जाते. So play with your pet and try to change the situation. Role playing. ना जो थोड़ा situation challenge कर रही है, उधे change करो. तुसी अपने आप को ना दूसरी situation put करके देखो, how will you play? So be helping to others. These are some of the ways that you can cope. और उदयस्ते की है बेटा, उदयस्ते करन अस्ते ना एक पहले लिस्ट बनाओ, मेरे कुल की अच्छाइयां हैं. What is it that's helpful to me? Make a gratitude list. Gratitude list means all the positive things that you have in mind. And on the basis of that list, then start brainstorming. फिर थोड़े तुसी देखो, you will have plenty of solutions. You will find a number of solutions.
Raman said solutions, but solutions find करने से भी बेटा you need to know how to do it. So lower your अपनी हमेशा expectations ना zero level रखो, ठीक है? Aspirations high रखो, expectations zero level रखो. जब तुसी किसी नवीन, for especially girls who are going to get married, when you're going to a new family, go with zero expectations. But yes, you should all have high aspirations. क्योंकि जब थोड़ी expectations high होती है तो वो situation नहीं मिलती, तो नहीं मिलती फिर obviously थोड़ा coping की problem आएगी. So हमेशा expectations of a situation should be zero. Again I repeat, aspirations should be high. अपने ना room में कोई ना कोई inspirational quotes लगा के रखो, ठीक है? ताकि अगर पहले ही तुसी मन परेशान है तुसी वो कोच पढ़ोगे देखोगे, ठीक है? You will feel happy to fight. Be very flexible, rigid नहीं होना. अगर तुसी जेड़े बहुत जिद्दी है, बहुत rigid है, please make a note of it. You are going to have a very tough time in coping your situations. जो थोड़े अंदर negative feelings आ रही हैं, उधे हमेशा opposite चलो. जिन्हीं भी negative feelings है, उधे opposite चलो. And हर situation दे pros and cons weigh करो और हर decision दे positive negative points. थोड़ा जब भी कुछ अच्छा कीता ना, थानू कोई नहीं भी अगर शाबाशी दे रहे, अपने आप में ही शाबाशी दो. Always pamper yourself. अपने आप में degraded नहीं show करना. I've seen that some students will say, मैं तो हुई ऐसी. क्यों मैं ऐसी हूँ? You're the best. Always pamper yourself. If you've done something, take a selfie, put it on the social media. Yes, see, I did this. Okay, you are in a difficult situation. Dress up at your best. Khush hoke pictures click karo. So always pamper yourself, and that is going to help you. Make a list of your strengths. Then make a gratitude list. Gratitude list is key. Like your parents are you have very good parents. You have a loving sister. You have loving friends. You have good colleagues. You have a good salary. This is your gratitude list. Your strengths are you're very social. आप सबके साथ mix up हो जाते हो. आपके पास लोग help के लिए आते हैं. आप बहुत flexible है. तो जो आपकी strengths है, जितनी भी थोड़ी strengths है, जो थोड़े positive points है ना, उन्हें दी list बना के रखो. Always advise when some people come to me for some kind of counseling, I always say अपने ना room कितने ना अपनी strengths को लिख के रखो, ताकि जब कोई situational deficiency आ रही है, कोई situational problem आ रही है, तो नो थोड़ी strengths जब दिखणगे ना, they will help you, and they will help you in accepting your challenge in an optimistic manner. Then you will be able to accept any kind of challenge. I've already told you how you can release your stress. As I said, go out, exercise, laugh, physical exercise, सो जाओ, सब कुछ बंद करके सो जाओ, ठीक है? Get a good sleep. When you get up in the morning, you'll forget everything. Eat healthy food. Don't go in for fast food, because fast food has preservatives, which is again going to affect your brain more. ठीक है? Go. चाय कॉफी पीने मत बैठ जाना. हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं ना, I personally do that. चाय पी लेते हैं, and that affects me more. So don't limit your caffeine. चाय कॉफी अवॉइड करो. थोड़ी सी चॉकलेट खा लो. वो आपको एक चॉकलेट ना एनर्जी बूस्टर होती है बेटा. So that is going to help you. As I said, deep breathing करो, slow breathing करो, प्राणायाम करो, ठीक है? जरूरत है नहीं किसी तरह नाल एवले हेल्प करे. Cry. When you cry, catharsis हो गया, you're out of it. Laugh. Okay. As I said, you want to shout, please don't shout in your bedroom where everybody is sitting. Go into the washroom and shout. कोई जिन्होंने बहुत ज्यादा कोपिंग दी, जिन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एक पंचिंग बैग खरीद लो और जाके पंचिंग कर लो. तुसी देखो, तुसी जब पंच करोगे ना, ते थोड़ा काफी स्ट्रेस रिलीज होगा. So these are some of the ways in which you can release your stress, which will help you in coping. Prayer, meditation, yes, it helps a lot. If you feel prayer can help. As I said, go and enjoy nature. Go help somebody. ठीक है? किसी मतलब अच्छी
वर्दी कॉज से जाके उदे च involve हो जाओ, कोई ऐसा काम कर लो जो थोनू डिस्ट्रेस करेगा, जो चीज परेशान कर रही है ना उदी इन्वॉल्वमेंट कट 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 CUT कट कर दो, कम काटते करनी है, बिल्कुल कट ऑफ कर दो। इंपॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटाइज करके ना हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, पॉजिटिव बोलो, and best is always prioritize your task and schedule your timing. That will help you. So this is how you are going to do well in coping. Best is that you need to build up your confidence. And for being confident, you need to have a good time with your with the people whom you love and they love you. What I mean to say is, spend time with your friends, spend time with the family. Okay? Give compliments, take compliments. Okay? जब कोई compliment दे तो ये नहीं ये तो ऐसे ही मेरे को. Give the compliments when they are given to you, and always praise others when it is needed. ये नहीं सोचना नहीं मैं क्यों praise यार, ये सुंदर लग रही है तो अपने लिए लग रही है, ऐसा नहीं. Always praise others, always give compliments to others, accept compliments in a very positive manner, give support to others. One thing I said, yes, go out for shopping, but always be control your budget also over there. You know, कि अपना catharsis कर दे, shopping करने चल जाओ, and you realize that you're out of your budget now. No. Those people who feel that yes, continuously they are in some kind of coping, they are in some kind of stressful situations and not able to cope up well, बच्चे कोई ना कोई इस तरह भी काम शुरू कर दो, कोई वॉलंटरी एक्टिविटी शुरू कर दो, कोई NGO ज्वाइन कर लो थोड़े दिन वाली, मतलब जाके गो आउट. सो जब थोड़ा दिमाग उत्थे लग जाएगा, थोड़ा ये लगेगा मेरे तो भी ज्यादा दुखी दुनिया बैठी है, you will forget yours and you will start working for them. Okay? So find ways to manage your stress on regular basis. Share your burdens with others. Okay? Always there are some people who are very moody. So you need to identify your changing moods. क्योंकि लोग ये कहें यार ये अभी तो अच्छी भली थी और अब इसको क्या हो जाता है, कहीं ना एकदम ही दोहरा जा पैंदा ना, इस करके अपना जड़ा मूड है आइडेंटिफाई करो और अपने जड़े थोड़े जड़े चेंजिंग मूड्स हैं उन्हां ते वर्कआउट करो, उन्हां नु एड्रेस करो. एंड बेस्ट इज लर्न हाउ टू बी इनर पीस होना चाहिए, अपने आप च किवें शांत हो सकते हो. For that you need to have personal coping. थोड़े अंदर थोड़ी अपनी, there are a few skills which don't come out from others, they need to come out from you only. How to release your emotion, how to think about the challenges, how to become a fighter, and how to give importance to yourself. क्योंकि अक्सर असी की है कि जब सानू प्रॉब्लम्स आती हैं ना वो इस करके आती है कि असी उस टाइम ने हमारे बारे में ऐसे कह दिया, या why am I in this kind of a situation, why am I not comfortable here. So basically we need to work on ourselves. You cannot change the situation, you can change yourself. Okay? Transformation needs to come from within you. तो सी अपने आप में change करो. Okay, these I'm not taking up these worksheets with you. Basically worksheets, चलो I'll just give you an idea what it is. तुसी अपने अस्ते अगर करना कर सकते हो कि ये वर्कशीट्स की है बेटा, ये ना कर्स्टन शूडर है जिसने के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, and he works on people, and how he works on people is कि जब देखो कोई जाना ना ये he gives them these worksheets to how to cope up with stress. In his first worksheet he says list all the symptoms, list all the symptoms जो कि थोनो स्ट्रेस कॉज कर रहे हैं, और वो सिम्टम्स केड़ी सिचुएशन, पहले तो केड़ी सिचुएशन है जेडी थोनो स्ट्रेस कॉज कर रही है, उस सिचुएशन किस तरह दे सिम्टम्स है. सेकंड कॉलम तुसी सिम्टम्स नोट कर लो, और थर्ड कॉलम वो सिम्टम्स दे नाल तुसी किस तरह नाल फील कर रहे हो. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग आउट समवेयर
and there is a traffic bash, बहुत रश है, बहुत ज़्यादा, और तुसी किथे पहुंच रहा है, तो उनकी है सिचुएशन की है ट्रैफिक, सिम्टम की है अब आपको घबराहट हो रही है, थोड़ा पै कार से सुन के हेडेक हो गया, तो पिच अपनी कार लाके खड़े हो, लाइन च लगे पे हो, so you your I mean heart beat fast हो जाती है, पसीने आने लग गए, हेडेक, these are the physical symptoms. उधर इमोशनल इफेक्ट की है, आप खिंचते हो, आप चिल्लाते हो, आप बैठे बैठे गाड़ी के अंदर ही गालियां देने लग जाते हो, आप बोलते हो ओहो मुझे जरूरी जाना था, कैन इट नॉट बी अवॉइडेड, जरूरी आज ही मम्मा ने भेजना था. So that is the emotional effect, and this causes you stress. कितना स्ट्रेस हो रहा है ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਜਰ ਕਰੋ 1 to 10 ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ 8 ਸੀ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ 3-4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ you have worked upon it. This is called as self-awareness. Learn about your stress. So first is that. Second is that now second way is worksheet says how to cope with that stress. Stress aa gaya si, theek hai. As I said, next time tusi jab isi traffic cho te tusi dekhoge कि थोड़ा ना स्ट्रेस लेवल पहली बारी तुसी 8 मेजर कीता सी, अगली बारी तुसी 6 ते आ गए 4. क्यों? क्योंकि you have started learning how to cope with that situation. What do? You're standing in the line, you're standing in the traffic, तुसी you say okay यार आज तो मैं अपना कोई पॉडकास्ट सुन लेता हूँ बैठ के, मेरे पास आज बहुत अच्छा टाइम है पॉडकास्ट सुनने का. तो अब आपका जो स्ट्रेस 8 नंबर पे था ना, वो 0 पे रह गया, क्योंकि you could utilize your traffic situation in listening to a podcast. You could utilize in talking to your best friend whom you had not talked for long. Okay? So what I want to say is, how can I cope with this situation now? And finally, how can I cope with the situation to reduce and finally eliminate my stress? So बच्चे ये ना जिਵੇਂ ਆਪਾਂ साइंस वाले ने पढ़े से साइंटिफिक मेथड, बाकी M.Ed वाले ने भी पढ़े, बाकी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं साइंटिफिक मेथड. कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ थोड़ी विलिंगनेस होनी चाहिए. पहली गल, थोड़ी सिचुएशन की थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, थोड़ी विलिंगनेस होनी चाहिए टू फाइट विद दैट सिचुएशन, एंड फाइनली वेरी लॉजिकली you will be able to cope with the situation, and you will be able to reduce your stress. I will say in 1 or 2 or 3 chances, after 1, 2, 3 chances, तुसी अपने stress को eliminate, तुसी अपने stress को खत्म कर सकोगे. So these are some of the ways how you cope with your stress. कई बार ना stressful situation इस तरह भी हो जाती है कि सानू कोई panic, सानू कोई anxiety होती है, उदे चो निकलण वास्ते की है बेटा कि उदे चो उस सिचुएशन च दिस आई एम नॉट टेकिंग विद यू, उदे च की है कि जेड़े ना always don't keep accumulating that panic in your mind. ठीक है, जिवें आपा है ना पानी उबलदा है तो उबली जाएगा उन्हें सिम कर दो. इसी तरह अपने दिमाग दे भी ना ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਕਰ ਦੋ. ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਰਿਬਲ ਮੂਡ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਂਗਰੀ ਥਾਟਸ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਥਾਟਸ, ਦੇ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਗੈਟਿੰਗ. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸੇਕ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਉਬਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ. And when it comes out, you start shouting at anybody. If you're not in a position to shout at anybody, you self-inflict yourself. तुसी अपने आप को harm कर दो. नहीं भी कोई physically अपने आप को affect करो ना. इस करके हमेशा अपनी situations जो भी थोनो परेशान कर रही हैं, panic की situations हो, simmer करने की कोशिश करो ताकि वो थोनो relax दन, थोनो या फिर जाके किसी ऐसे इंसान को बैठो
जो थोड़े नाल रिलैक्सिंग मूड नाल गल करे, जो थोनू सूद कर सके। कई बार तो आप देखते हैं देयर आर अ फ्यू फ्रेंड्स हु रियली हेल्प यू आउट, दे विल से छोड़ यार ये परेशानी तो सबको होती है, कोई बात नहीं, आई थिंक वी कैन फाइट दिस, वी विल फाइट टुगेदर। यस, दैट टुगेदर वर्ड ओनली विल help you, will say yes. Probably another friend of yours, I am also facing the same situation, but I feel you are more stressed, so let's relax together. So relax together, that will help you. Okay? So basically beta kuch nahi karna, jab koi aisi problem aandi hai, excite the situation, excite the feelings, thoughts, और हुण तुसी एक पूरा अपना मेथड अडॉप्ट करो, हाउ टू fight that situation, how to improve those feelings, and how to bring those thoughts out of your mind. So aware is, some of you must be adopting this. Very good technique is start diary writing, start kar do, bahut help kar diye. Diary writing will help you, kuch bhi write karna. So this is basically how you can come out of your stress and cope with the various situations. So these are some of the very common coping mechanisms. Theoretically, if you study coping mechanism, positive, negative psychology की book ले लो, बहुत सारे हैं. Basically, I just wanted to take up those which you can handle easily. So beta, always remember that the change has to come from within you. कोई भी situation है, उन्हों असी change कर सकते हैं, but वो change ताई आ सकती है when you are ready for that change. Okay, so this is all about my topic today. Now the house is open for questions. Any questions, any discussions? You discuss anything you want to give. I'd be very happy if anybody cannot, मतलब किस तरह दी कभी कोई situation आई and how you fought that situation. If you want to share, it might help others. Because मैं पहले क्या कि sharing will help, sharing your thoughts, sharing your problems, you will be helped, others will also be helped. हाँ जी. So you can just unmute yourself. हाँ जी बेटा, अपने आप को unmute करके. Ma'am. Yes बेटा. Good morning. Morning बेटा, good morning. हाँ जी. मैम ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੇਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਮੈਮ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਢੂੰਢਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਮ? बच्चे मैं थोनू हुणे क्या ना कि थोनू जब कोई प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्यूशन लभदो, सॉल्यूशन ना बेटा साइंटिफिकली लभो, शॉर्टकट वाला सॉल्यूशन नहीं लभना, इस तरह ना लभो कि जिवें मैं थोनू देखो मैं थोनू ये दस्या सी कि देखो ये वाली इधर एक वर्कशीट ते दस्या ना कि तुसी कुछ नहीं करना, तुसी बेसिकली पहले तुसी सॉल्यूशन लभन तो भी पहले तुसी ये देखो कि हाँ थोड़े ते इफेक्ट की पिया सी, उस तो बाद उस इफेक्ट ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ every time try to reduce the effect, automatically you will find that it is eliminated. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕਲੀ ਅਗਰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ. Now I don't know what kind of solution you have. कई बार तो कि आप escape mechanism use कर लेने हैं, फिर escape कीता फिर से problem दोबारा आनी आनी. Escape कीता तो फिर से problem थोनू दोबारा आई. So avoid escaping. Okay? Don't escape. Find a scientific solution. Am I understandable, Himanshu? हाँ जी मैम, thank you. हाँ जी. Okay बेटा, thank you. हाँ जी. Anybody else? हाँ जी बच्चे, बाकी सब सिर्फ वैसे ही बैठे थे, कुछ नहीं सुन रहे थे जी. Others were just sitting there not listening. मैम एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे दिमाग 'ਚ. हाँ
ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੈਮ ਸੌਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਮ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? बच्चे हमेशा रिलैक्स होके सोवो जब ਤੁਹਾਨੂੰ कोई प्रॉब्लम्स इस तरह दी आ रही हैं जो ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि this I could, they are actually not your mistakes, they are actually, you can say that all that which could not be fulfilled, है ना? just make a note of it and ਉਹਨੂੰ ਨਾ prioritize ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਆਪਣੀ, they are not actually beta your mistakes, they are basically ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ you were not able to fulfill, so always prioritize, and when you sleep in a relaxed manner. Don't take those don't take that in your mind, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬਸ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਲੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है? यस मैम, ठीक, थैंक यू मैम। ओके बेटा, एनीबडी एल्स? मैं ये सोचा कि सिर्फ हिमांशु ही प्रॉब्लम सॉल्व चाह रहे हैं, बाकी दे आर वेरी हैप्पी विद देयर सिचुएशंस। गगन, Aman again, others. So is it done? Then can we stop? Can we end here? Okay, ma'am. So, okay, chalo, theek hai. So that's enough. So I assume that either you have not followed anything or you followed everything. Main ki assume kara? Kara? Chalo. Thank you, ma'am. Okay, beta. Okay, chalo. Okay, bache. Chalo. Okay, beta.